Okay. So I'll just give you one short summary also simultaneously. Just one moment. Let me just try to open one folder. I think it's not opening. Okay, no problem. Okay, like so what we have covered in the last class, Abhishek? Regarding this management and observation behavior, Correct. And we have, so guys, last time we have covered what is management. We have covered the meaning definition. We have also covered the management styles, like what kind of leaders are there and what are their advantages, disadvantages. Okay, like I mean, generally what happens, like when you get a question related to leadership, like what kind of leader uh, are successful, or maybe they can ask some traits. So you have a different type of leadership here which you can explain. Okay. Abhishek, have we covered the layers of management? mm, I guess no, ma'am, because I left the class early a bit because I had to check out from the hotel. So I took your permission and left on 25th of December. I guess I have missed this. Sorry. I left the class early, taking a Uh-huh. permission because I had got some work to do. So No I problem, no problem. I am okay with that. Okay. Now, guys, let's talk about layers of management. Okay, so before we start layers of management, I'll give you the gist about like what is management. So generally, when you talk about management, what is it? Anyone from the students? it's managing a organization, or it's management is something which is getting into the streamline, like in a definitive way, or in a track for Right. any particular task Okay. in a more Anybody? organized way. More making it more organized. So generally, when you talk about management, it is getting things done from others in an effective manner. Okay, that is something when you talk about management. हम कितना काम औरों से करवा लेते हैं, किस तरह से करवा लेते हैं, efficiently करवा लेते हैं. That is something where management comes. Okay, because when you see management, okay, when you see management, you see that people are addressing the audience, or maybe the followers, or a team, by instructing them, by telling them like what is to be done, how it is to be done, right? So the gist is like you have to get the things done from others in an effective manner. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay, now let's talk about layers of management. So we have lower level, middle, and upper level. This is very generic and very self-explanatory topic. So what do you understand by lower management? Now I want everybody to participate. Akshay, Amal, Divya, everyone to speak about it, so that we can discuss and close these topics. Okay. So I'll give you 2 minutes. If you want, you can just read and then explain. Because one big question comes from management topic. Okay, it may contain principles, it may contain leadership, it may contain layers of management, or maybe it may contain 2 3 different parts and becomes a big question for you. Okay, so it is very important to understand and then explain. Okay, because what I'm trying to do is like we need to explain and close it here itself. Okay, so that at the time of preparation for the examination, you would have a better command on these topics. Okay, you want me to give you 5 minutes and to read and explain? Yes, ma'am. Okay, fair enough. All right, take 5 minutes, read this three layers and then explain. I'll give you 7 minutes, but explain it properly.
Shall I scroll down, guys? Hello. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Tell me. Shall I scroll up? Yes, ma'am. Okay. Shall we go down now? Guys, is it completed now? Have you read? Yes, ma'am. Okay. Everyone? Chaliye, okay. Now who will explain lower level management for me? Shall I? हाँ, बोलो. मैम लो लेवल मैनेजमेंट तो नाम से पता चल रहा है कि जो हायरार्की है मैनेजमेंट की उसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे है. इसके अंदर जो मैम बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि जो एम्प्लॉयज हुए हैं उनको सुपरवाइज करना है. मैम like managers at this role are concerned with supervising the day-to-day works of the employees, and they have to make sure that the employees are coming to the organization, they are doing their work up to the quality benchmark and meeting the deadlines. And Very good, very good, very good. So they are like the very close people with the workers or with the lower level, performers, so that they can supervise and they can guide them for day-to-day guidelines, day-to-day work, day-to-day responsibilities, and simultaneously they will also be giving a feedback to the employees on the performance based. Okay. yes, ma'am. Very nicely explained. Okay. Then what about middle management? Who will explain middle management for me?
Yeah. Who will explain middle management? Divya? Divya is not there. Farid? मिडल Yes. मिडल मैनेजमेंट में आप एक्चुअली explain करोगे middle management? या हाँ या आई विल ट्राई Yeah. वो है ना वो एक्चुअली डिपार्टमेंट मतलब मेरे हिसाब से वो होता है कि जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनको गाइडलाइंस देते हैं उनको मतलब ड्यूटीज देते हैं और दूसरा ये कि जो उनके ऊपर होते हैं जैसे डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया रीजनल मैनेजर हो गया ये सारे गोल्स एंड डेवलपमेंट्स उनको बताते हैं कि भाई हमें ये क्या करना है कैसे करना है आगे कैसे काम करना है उसका पूरा उनके पास बायोडाटा वगैरह कुछ हर चीज उनके पास होती है मेरे हिसाब से यही होता है Correct. So they are like more into the management roles, like department manager, regional manager, or maybe head of some small departments, right? And what they do is they will also be responsible for communicating the strategic goals which are developed by the top management or the senior management, right? यस मैम Right? And providing guidelines to the lower management for their performances, right? So very, यस very मैम simple, यस very मैम simple. But in terms of responsibilities, in terms of accountability, they are more into the management part. Okay. Okay. And last one is senior management. Akshay. Akshay. Amal. मैम जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो मैम उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स ये सब आते हैं और ये एकदम मतलब टॉप का मतलब टॉप प्लेयर होता है मैनेजमेंट हायरार्की का और मैम इनका काम होता है मतलब जैसे कि बाहर से कोई भी रिसोर्स हो ये सब लाना होता है शायद Ma'am, may I try this? Okay. The senior management basically deals with the end-to-end process. It's about the delivery. It's about the streamlined process which has been taken care by the lower management group and dealing with the exact client. They basically deal with most of the targeted clients and they give a direction to the policies, the process and the workflow, the organogram which works as per the requirement for a particular organization, which need to be taken care in a streamlined process, and all the policies and the plan of the organization, the direction which need to be, like they give a direction to the middle management and the lower management, like the hierarchy process. The team lead takes care of the operations. That is the associate level, whether the operation is working in a smooth manner, in a streamlined process, and then it goes to the middle management. The middle management reports to the senior management. The senior managements look into the exact delivery and the client process, what's happening with the client, and whether the client is really satisfied or with the task which has been given to a particular organization. Correct, correct. Fair enough. Very good. Excellent. Okay. Everyone has done a good job. Good, good, guys. Okay. So when we talk about senior management talk about the, top officials, the top executives like executive officer, CEO, president, vice president, and the board members. So they are the top layer of the management. So what they do is they set the overall goals for the entire organization.
Okay, like for example, one important thing when we talk about decision making in terms of mobilizing resources, mobilization of resources doesn't mean you hire a resource and then take an interview. No, mobilization of resources means you talk about all the important resources, whether it is related to money, whether it is related to your people, or maybe any other asset which you need to allocate to your line of unit or a business unit. Okay, those type of decisions are related to mobilization of resources. Okay, and most of the time they are more into strategic decisions. What do you mean by strategic decisions? Wherein you take care of the entire planning, the impact and the overall controls, right? And most of the decisions are related to very high decisions related to money, related to planning, related to development, related to diversification, related to maybe any new line of business. Okay, these type of decisions comes under senior management. Okay, got my point guys? कोई confusion यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं टिप्स फॉर बीइंग अ गुड मैनेजर। मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए लिखवाए हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि you may find that the management is not effective or management is getting failed, or you have hired a manager who does not have the appropriate skills. So what do you think, what is lacking in them? Or sometimes you may get a question that a manager is very effectively managing a team. Why do you think he's good in managing the team effectively? So then in that case, you will answer the question by putting these points, saying that these are the skills that we can see in a good manager, which is actually helping him to manage the team nicely or appropriately. Okay. So what are those important factors, or what are those important features or traits of a good manager? He would be, first of all, very good at communication. So what do you mean by good at communication? He's good in English or he's good in talking? Communication skills should be very effective, very strong. And communication skill doesn't mean only English or maybe any other language command. No, communication skills good means that you are able to communicate the expectation of the management to the performers, and at the same time you're able to analyze and manage and communicate the feedbacks, the important inputs from lower level to top management. Okay, so you need to understand their needs, evaluate their progress, and keep on helping the performers or the followers to achieve their goals. Okay, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि अंग्रेजी अच्छी बोल ली या हिंदी अच्छी बोल ली या लैंग्वेज अच्छा बोल लिया या ज्यादा बात कर ली। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो भी टीम के गोल्स है, रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेशंस है, वो आप इवेल्युएट करके साथ साथ मैनेजमेंट को भी दें, और मैनेजमेंट की क्या जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, वो आप अपने टीम को दें, right? And you're able to make a proper balance or coordination within team. Got it? Okay, next is be positive. So obviously a good manager will always be positive, with a good positive attitude, so that you can make your team more comfortable and happy in terms of communication with you, so that you would have the complete understanding of what is going in the team, क्या चल रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और के क्या आंसर्स हम दे सकते हैं। उसके बाद ट्रेन व्हेन नीडेड मींस आपको जहां जहां लगता है कि आपके टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, उनकी कोई स्किल्स में कमी आ रही है, या उनको काम करने के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ कुछ असाइनमेंट्स की जरूरत है, देयर यू वुड allocate the new trainings to your existing team or maybe new team members, so that they would perform better in the future requirements. Collaborate. So as a manager, you will also be comfortable in delegating tasks. What do you mean by comfortable in delegating task? मैम टास्क को दूसरों को देना उनके कंपिटेंस और स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। Exactly, very good. So उनकी competencies के हिसाब से, उनके स्किल सेट के हिसाब से हम उनको टास्क को डेलीगेट करेंगे, असाइन करेंगे,
right? So that you would have the proper coordination within team, proper allocation within team, and everyone would perform better. Everyone would start taking new challenges and they can grow. Okay. And your work is also managed properly when you delegate it properly to your team members. Then practice. Of course, best way to acquire new skills is to practice them in real life management setting. Obviously, so what they're saying is that for the promotion ladder also, you keep on delegating your work to your team and you start accepting the new things within your team so that you all can grow. I mean, your manager will also grow and you will also grow. Okay. Guys, clear? Yes, ma'am. Any questions so far? Okay. Next, again, very, very important is functions of management. This I want you people to really, read it thoroughly and discuss, because this is something wherein you mostly get a question related to this. Either you will get as one part, or maybe you can get a complete questions on functions of management. Okay. So I'll give you again 5-7 minutes to, or maybe 10 minutes just to read it completely. Okay. And then I will explain the importance and other stuff. But first of all, you read it completely. It's very, very, very important. Most important question in this entire subject. Okay, so I'll give you 10 minutes. I think 10 minutes will be sufficient. You will give a self-read and then, we will explain. We'll discuss and explain. Okay? Guys, am I clear? Okay, ma'am. Okay. So your time starts now. Please do not waste this time. These 10 minutes are very important from your exam point of view.
Guys, have you read the other part? Shall I move to staffing? Students? Yes, ma'am. Okay. ऊपर वाला हो गया ना? पढ़ लिया ना एक बार? जी मैम. ठीक है.
Guys, done? Yes, ma'am. Okay. Chalo, good. So let's start with the first one. Okay. So what do you mean? What do you mean by functions? फंक्शंस मतलब वो रोल्स जो कि एक मैनेजर्स को करने होते हैं. हाँ, right, correct. So basically, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, मैनेजमेंट has these important functions or the stages which has planning, organizing, staffing, directing, and controlling. अच्छा, you can see that this is into a circle. That means it's a vicious circle. It will never stop. अगर हम बोलते हैं कि आज प्लानिंग कर लिया और उसके बाद हमें कभी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. या आज डायरेक्शन दे दी, नेक्स्ट में कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग से आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है. आपने देखा होगा ये स्टार्स के जॉइंट्स और ये सर्कल का मीनिंग यही है दैट इट कीप ऑन रोटेटिंग एंड इट इज अ परवेसिव फंक्शन. लाइक आई मीन इट वुड रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस और सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड एंड कीप ऑन मूविंग, राइट. अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे, राइट. Now first we need to understand what is planning. So who will explain planning to me? Guys, you should. Shall I? Everyone should participate. Okay, it should be two-way. Okay, please go ahead. Ma'am, like planning is to decide what we have to do and when we have to do and how to do it. And ma'am, it is making decisions today that will impact the future of our company in terms of the goals we have set, the objectives we have set. And a manager is basically responsible for designing or planning the blueprint of a project or program. And ma'am, he is the human resource we will be needing and the targets of the program that we are planning, and ma'am, the resources required, these sort of things. Correct. So basically it is a function to decide what is to be done in future, right? How you're going to do it, what are the important aspects that needs to be considered, what are the important goals that we need to fulfill, that would come under planning role. मीन्स हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, होना क्या है, कब होगा, कैसे होगा, वो सब प्लानिंग में आ जाएगा. Then we talk about organizing. Organizing means next. I'm arranging the human and non-human resources. Okay. Organizing का मतलब होता है basically एक structure बनाना, एक ढांचा बनाना wherein you will what? You will create a layout saying that कि इस यहाँ पर ये रिसोर्स लगेंगे, वहां पर वो रिसोर्स लगेंगे, ये यूनिट मेरा ये काम करेगा, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये अकाउंटेबिलिटी होगी, इस यूनिट से हम ये वाली एक्टिविटी करवाएंगे. You will also classify the activities in a group. You will also assign the duties to that group. You will delegate, you will coordinate. Everything would come under organizing. So organizing में यहाँ पर अभी लोग नहीं आए हैं, सिर्फ हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. जैसे अगर आप, for example, if you want to start a hospital, then how many people will be allocated to a particular department? How many departments are there? What will be the the requirement for that department? What are the resources that you will be allocating? What are the financial that will be involved in a particular department? What is the total goal that needs to be fulfilled? So that will come under organizing. Okay, जैसे कि इस डिपार्टमेंट में कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने नर्सेज होंगे, कितने सपोर्टिंग स्टाफ होगा, वो सारी चीजें आप स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग में करते हो. एंड देन कम्स योर स्टाफिंग wherein you would fulfill those positions through manpower. Okay, so it will have all the stages like manpower planning, wherein you will decide about the people who will be fulfilling the jobs that you have organized or that you have created in organizing. You will also do the recruitment, selection, training and development. You will also be doing the calculating or making the remuneration scales, performance appraisal aspects, and finally the promotion and transfer. So everything related to people will come under staffing. So staffing is basically putting the right people at the right time. Okay, so that you can fulfill the requirement by putting the right people into the
right requirements. ठीक है? Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Next. Now who will explain this directing? डायरेक्शन कौन बताएगा पूरा अच्छे से? अमल? अमल? मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया। अच्छा, अब्दुल आपको आया है? यस मैम। ठीक है, आप एक्सप्लेन करो सबको। मैम डायरेक्टिंग का मतलब बेसिकली होता है कि एम्प्लॉयज को गाइड करना है कि मतलब क्या चीज़ कैसे करनी है, उनके जो डेजिग्नेशन है और उनको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उसको कैसे फुलफिल करना है। इसके अंदर हमारी आ जाता है सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप आ जाती है। सुपरविजन का मतलब हो गया कि हम लोग ओवरसी करें, देखें कि हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सही से काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं पे चैलेंजेस तो नहीं आ रही हैं। मोटिवेशन का मतलब हो गया उनको इनकरेज करना है या फिर उनको इंस्पायर करना है कि उनको जो गोल्स दिए गए हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको वो लोग फुलफिल करें, पूरा करें। और मैम लीडरशिप का मतलब हो गया है कि मैम वही कि हम लोग जो है एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और मैम कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे ओपिनियंस हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करें जिससे उनको हेल्प हो। ये है मैम। Okay. Is it clear to others? So basically डायरेक्शन जैसे हमने बात करी, जब हमने फाइनली लोगों को फुलफिल कर लिया, अपनी पोजीशंस को फिल कर लिया, then we will also tell them like what is to be done by them, right? What all activities, what all duties that needs to be followed by them. वहां पर आपका supervision, motivation, leadership and communication, all these sub functions will be applied. You will be supervising people by saying that you have to perform this particular work, and simultaneously this will be duty, this will be your authority, this will be your accountability. At the same time, you will also be motivating your people so that they would perform better, they would like to perform what is allocated to them. And at the same time, you will also have to have a leadership skill so that you would motivate them by influencing, by showing them, or by becoming a kind of leader for them. So they becoming a kind of role model for them so that वो फॉलो करें आपको। उसके बाद हम साथ में रखते हैं अपना कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमने बात करी थी पहले भी, कि उनके ओपिनियंस लेना, उनको ड्यूटीज एलोकेट करना, उसके साथ साथ उनको साथ में गाइड करना। फॉर दैट यू हैव टू हैव अ गुड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद योर पीपल, that would come under your communication. And finally we have a controlling, means जो भी आपने उनको काम दिया है, जो भी आपने उनको असाइन किए टास्क, उनकी जो स्टैंडर्ड्स है उसको और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। मींस जो आपने उनको बताया और जो वो कर रहे हैं उसको कंपेयर करके देखना कि भाई कोई गैप तो नहीं है। अगर कोई गैप है देन वी विल फुलफिल दैट बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग, बाय गाइडिंग और सुपरवाइजिंग बाय टीम मेंबर्स। अगर गैप नहीं है इट इज वेल एंड गुड। और हो सकता है कई बार बेटर परफॉर्मेंस हो रही हो। बेटर परफॉर्मेंस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 की प्रोडक्शन एक्सपेक्ट की थी और 11 की प्रोडक्शन आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कोई कमी है, और भी अच्छा हो सकता था, हमने कम करवाया है, एस्टिमेशन जो है हमारा कम रहा है। इट मींस हम लोग अपने फिर प्लानिंग को दोबारा से हम एनालाइज करके फिर से रीएस्टैब्लिश करेंगे। तो दैट इज व्हाई वी से कि ये जो फंक्शंस है सारे कीप ऑन वर्किंग, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो छुट्टी। ठीक है, नाउ वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई ये, इसके बाद ना हम हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स भी करेंगे। गाइस डू वन थिंग, यू प्लीज रीड इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल हेनरी फियोल। ये हेनरी फियोल के जो 14 प्रिंसिपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आप बताओ कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपके मैनेजमेंट में फॉलो होते हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक्स साथ में वहां पे कवर करना होगा। ठीक है, एंड नाउ आई विल गिव यू अनदर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स रादर, क्योंकि प्रिंसिपल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो वो आपको लर्न भी करने और आपको समझने भी है। एग्जाम में कभी कभार 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो यू प्लीज गो थ्रू दिस, टेक 15 मिनट्स एंड डू इट थॉरली सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हो जाओ। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर?
Yes, no? Ma'am, these are the particular points which need to be covered, this is given by Henry Foyle, right? Like we have No, to these are cover the in the exam. yes. So these are, it is like importance. And next you will have Henry Ford principles. These are the principles like division of labor, parity of authority and Okay. responsibility. ठीक है, 14 प्रिंसिपल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है. ओके, so I'll give you 15 minutes for this. Over to you guys. Guys, shall I scroll down? Hello, Yes, ma'am. shall I scroll down? Yes, ma'am.
Guys, done? Abdul, Yes, ma'am. Abhishek, have you done all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमल ने भी? अमल, हाँ, हो गया मैम. समझ में आए सारे? मैम ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत इजी है. हाँ, लेकिन अभी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है, जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना, भूल जाते हैं हम लोग ये. मैम बहुत, ये तो लेंथी बहुत ज्यादा है मैम, इसको हाँ, याद रखना इसीलिए मुश्किल है. और लेकिन अभिषेक ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स है ना, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे भी जब जब भी कभी कहीं पे भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ना मैनेजमेंट पढ़ोगे, या इन केस अगर आप पीएचडी वगैरह करते हो तब भी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आता है, तो ये हेनरी फेयोल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Ma'am, he's called the father of management, right? Yes, His points are very one of important the father because of the management. There are so many authors, so many followers, so many what do you say, the uh, authors who has given different definition, meanings and kind of contribution in the management field. Because देखो management एक ऐसी चीज है जो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है, करेक्ट? तो एज एंड व्हेन यू प्रैक्टिस, you develop something new, you develop something different, and then you impart it to your audience, to the people. You write it on this, okay, so that new theories, new principles, or maybe new conventions would come in practice. जैसे सबसे पहले क्या होता था, मैनेजमेंट का मतलब क्या करते थे, डंडे से ही आपने काम करवाना है. लेकिन धीरे धीरे जब रियलाइज हुआ कि लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैनेजमेंट में, बिकॉज क्यों लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपका फाइनेंशियल भी तो पड़ता है. आप समझ रहे हो कैसे? उसका अगर सपोज वेलबींग हम लोग नहीं ख्याल रखेंगे उसको, मतलब उसका प्रॉपरली अगर हम लोग देखभाल नहीं करेंगे, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो फिर उसकी वजह से टोटल जो एंड टू एंड प्रोसेस में हम लोगों को इफेक्टिव होगा. एवरीवन विल बी अ पार्ट जो और सोचो, प्रोडक्शन कम हुई, एक तो चलो ये आपका आउटपुट कम आया, और सोचो. कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? You want me to repeat the question? यस मैम. My question is, I mean, as like earlier, the practice was or I would say the traditional approach was to get things done by people through force. Later on, modern approach has come. It says that your people are also important, right? Because you get your things done from people. अब आप ये वहां पे जो people का जो फोकस आया, जो इम्पोर्टेंस आई, आपको क्या लगता है किस वजह से आया? क्या इम्पैक्ट है आपको? आपने कहा कि अगर आप लोगों की नहीं ख्याल रखेंगे, यू वुड नॉट टेक केयर ऑफ पीपल, दे वुड नॉट परफॉर्म वेल, और उसकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी, विच इज अ वैलिड पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट अदर थिंग्स डू यू थिंक हैव मेड पीपल इम्पोर्टेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑल्सो? तभी स्टाफिंग का ना फंक्शन अलग से बनाया गया, एक वन ऑफ द मेजर फंक्शन बनाया गया मैनेजमेंट का. और सोचो, थिंक अबाउट इट, व्हाई? मैम जब तक आपके पास कंपिटेंट स्टाफ नहीं होंगे तब तक सारे रिसोर्सेज वेस्ट हैं. ठीक है, और चलो कॉम्पिटेंट स्टाफ आ गया, अब आपकी छुट्टी. नहीं मैम, हमें उन्हें उनका टारगेट देना है, गोल सेट करना है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है. ओके, और ऐसा क्यों करते हैं यार? हम सिंपली उनको एक मेल पे उनका काम दे दें. मैम इवैल्यूएशन Ma'am, होनी चाहिए ना पीरियोडिकली. basically money is the biggest motivation in every field, every structural field. So if the one thing is Henry Fowler decided, or another one I forgot exactly who is, like one of the person also has involved that, how to motivate the people to make the work done. If you do not take care of the people, like setting up a goals and for their appraisals and all everything. That's So why is it important to motivate them? Why? Motivate, if we do not motivate for any aspect, any stream or any work in a life, you cannot achieve that goal, right? So motivation is very much important to make the people work consistently with a good performance. Okay, for the So they started introducing this
what is that called? Mm, HR. HR, yeah, human resource तो है, but that appraisal process, Performance the appraisal. performance appraisal, and like everywhere, like star performers and all everything, they will be rewarded by if the work is done in a targeted stipulated time or less than a stipulated time. Whoever done the work in a accurate manner will But be my again, awarded. the question is why? See, I am asking this question from a management point of view or a business point. Like मैं अपना business चला रही हूँ, मुझे बार बार लोगों को motivate करना, मुझे उनको उनके टारगेट समझाना, उनको गाइड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, बार बार मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? रेवेन्यू नहीं तो जनरेशन, रेवेन्यू के नहीं लिए अच्छा, और पर हर कोई रेवेन्यू थोड़ी ना ला रहा है, मार्केट कैप्चर, सेल्स वाले लोग मार्केट रेवेन्यू कैप्चर ला रहे करना है। हैं, ऑपरेशंस वाले लोग थोड़ी ना रेवेन्यू लाते हैं। हमारे बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए कैसे? स्टाफ से, मैम स्टाफ काम करेगा तभी तो हमारा होगा। अच्छा अच्छा, आप उसको मोटिवेट नहीं करें तो स्टाफ काम नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल, ये सोच रहे हो आप, है ना? चलो आपने उसको डंडा करके काम करवा लिया, अब परफॉर्मेंस गिर जाएंगे ना, क्वालिटी एक्यूरेसी वेरी that will गुड, be drop down वेरी if we नाइस। हम उसको डंडा और करेंगे क्या नहीं, होता है, और क्या होता है जनरली लोग क्या, जब परेशान हो जाते हैं लोग क्या करते हैं, फिर छोड़ देते हैं जॉब। छोड़ देते हैं। छोड़ देने से क्या इम्पैक्ट है? छोड़ देने से फिर काम सफर करेंगे, मैन पावर कम हो जाएगा, आप दूसरी बात थिंग्स लगा विल लो, नहीं, मतलब एक वी जाएगा वी 10 आएंगे, 10 को सैलरी दो, मतलब नहीं, लेकिन बस जिसके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया पैसा, जिसके ऊपर ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया, उसको एक एग्जैक्टली तैयार किया, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो फिर दैट्स व्हाट आई एम खत्म। आस्किंग, दैट्स ओके व्हाट आई एम ओके। आस्किंग फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स, कि उनका जो ट्रेनिंग कॉस्ट रहता है, रिक्रूटमेंट, अब आप देखो ना, आप उनको नए नए लोगों के लिए फिर एडवर्टीजमेंट दोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, अपनी रिक्रूटमेंट टीम को लगाओगे, रिक्रूटमेंट टीम का टाइम एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि उनको भी तो सैलरी जा रही है रिक्रूटमेंट टीम को, राइट? आर यू गेटिंग? देन यस आप एडवर्टीजमेंट अगर एजेंसी वगैरह के थ्रू कराते हो, आपको उसको भी कमीशन देना पड़ेगा, करेक्ट? जी। And you would also give training to new employees. They would not be able to grasp your work within starting phase, like maybe हो सकता है 1 महीना 2 महीना लगे उसे समझने में, करने में, है ना? That's the reason, like every organization has put up a notice period of 3 months. Practically, some Even are kept it one yes, 1 month. and it's not about only notice. See, even if you have given a notice period, जो आपका जो नया एम्प्लॉय आएगा, अब पता नहीं वो उस लेवल का काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा जो आपका पुराना एम्प्लॉय कर रहा है ना? In crux, we can say like we do not want to lose the assets. Like Assets, that's we the need to reason. retain them, we need to polish them, we need to upgrade Hmm. them so that और एक चीज और भी है, देखो आप एक काम अगर फॉर एग्जांपल 3 साल से कर रहे हो, आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि आप उसको उसी काम में जहां जितना आपका टाइम एफर्ट लगता था उसमें अब आपकी एफिशिएंसी की वजह से वो 50% और गिर जाए, भाई कम टाइम लगे, एफर्ट्स भी कम लगे, बिकॉज नाउ यू आर सो एफिशिएंट, यू आर यूज्ड टू इट, you know the problem area, you know the challenges, and you know how to face them, correct? But a new employee may not find that job easy or efficient in terms of performance at an initial stage. But sir, ma'am, there's some organization, but they do, like what is my experience I've seen, like suppose an employee or an operation team has been given, or a manager has been, dedicated with one particular work or a project, and then once the project runs very smoothly in a streamlined manner, they immediately move that person to another project with new challenges, and That is they called that is called job enrichment. yes, You but that enrich is the job through different roles, different different challenges, roles. Yeah, different yeah, activities. yes, but it becomes tough for that particular person to grasp again that new environment, getting into the new system, new challenges, and then again like रात काली करने वाली बात हो जाता है कि Correct. परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो भी एक टैक्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के।
हाँ, that's what. दुखी करने वाली बात है. I think that generates a negativity also. But at the same time, some employees are like that. I mean, they don't work, they don't perform, and they want everything. Salary भी चाहिए, progress भी चाहिए, promotions भी चाहिए, और politics भी करनी है, टीम बाकियों को demotivate भी करना है. तो obviously management ऐसे लोगों को नहीं चाहते अपने organization में. Yeah, that is a different scenario. But when a person suppose is given a task or some other project and who has done very good, and the project runs in a very green flags and all everything, perfectly settled down and all everything. Within 3 years, he has grasped every opportunities, the interaction bonding with the client, and as well as the operation teams or the associates and all everything is done. Now when he thinks or she thinks, so now my life is going to be stable or smooth, that I can handle the scenario which I used to take 12 hours per day, or 8 hours or 9 hours, I can make it out right now in 6 hours, and that 4 hours of gap I can relax it with. But immediately they put up to another new more challenges and get you to some other projects and switch to this one. That is also, it's not a, that is a part of management, but I believe that that is not a good practice. It's, yeah, that even that if that person is willfully wish to change that project or domain and go to some other challenges and do it, that is better, that should be taken But care. sometimes you seem that it's easy, that you have to align yourself, you have to align the management as per the employee, but sometimes management has to take harsh decision to make employee more progressive, more active, or maybe more challenging in terms of taking future jobs also, right? Okay. कभी कभी देखो ऐसा Yes. होता है, लगता है हमें कि जबरदस्ती चेंज कर दिया, एम्प्लॉय विलिंग नहीं है, वहां पे हम लोग चेंज मैनेजमेंट एक टॉपिक आता है एचआर में, वो बात करते हैं, wherein you involve your people in a discussions, in a participative sessions, and make them understand about the importance, about the output of that particular change. ओके, बस ऐसे नहीं मुंह उठा के डाल देंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा पहले बताने की, समझाने की, एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड. Yeah, the transition will be slow एक and बात और भी steadily. देखो ना, आप कोई भी नई जॉब में आते हो, चाहे आपने वो काम किया भी हो, तब भी आपको चैलेंजिंग लगता है इनिशियली, Initially, हाँ. है ना? तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट भी चेंज होता है, तब भी आपको थोड़ी देर के लिए चैलेंजिंग लगेगा. हाँ, but लेकिन उसके लिए तो remuneration ज्यादा देना चाहिए ना, that you're getting into the next level of task. So मैनेजमेंट के आगे प्लान्स हो आपको प्रमोट करने के लिए. हाँ, that's what like promotions and all is, but they do not give that remuneration which an employee expect. There the motivation and these things करेक्ट, need to be taken care. Right. ट्रू. सो इट डिपेंड्स. एंड ऑफ कोर्स देखो, हर तरह की मैनेजमेंट होती है, हर इंडियन सिनेरियो में तो खास तौर से आपको नेगेटिव भी मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की सोच मिलेगी. सो यू हैव टू adjust accordingly, and then you have to take a decision whether you want to stick to it or you want to move on. Yeah, exactly. No, I think today's world, money is the biggest motivation. If you pay handsomely, anything can be taken care. That's what. But if you do not want to pay that amount or something, and you want that person to stick to that particular amount and ask him to get more new challenges and do good in that new projects which has been aligned, then it's like demotivating. Correct, that's true, that's correct. But sometimes management also do it intentionally, to make your employee out of the organization. Force them to leave. Correct. Yeah, that's also like happens. चलो, इम्पोर्टेंस तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी. हमने पढ़ी थी कि जो ये फंक्शंस है, इन सबकी इम्पोर्टेंस या मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस यू हैव, क्योंकि इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, आपकी कॉस्ट कम रहेगी, क्योंकि आप हर चीज पे ध्यान रख रहे हो, कंट्रोलिंग रख रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन साउंड रहती है, और आपकी प्रोस्पेरिटी भी रहती है उसमें. ठीक है, लेट्स मूव टू दिस हेनरी फियोल प्रिंसिपल्स. डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोलती है कि हेनरी फियोल ने क्या बोला कि आप स्पेशलाइज जॉब्स पे फोकस करो, राइट? काम को डिवाइड करो अलग अलग स्किल सेट के हिसाब से, एंड देन गिव इट अ रोल, एक्सपर्टीज रोल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, not everything to everyone. So you have to divide the work according to the skill set so that you have a efficiency in terms of results.
ठीक है, क्लियर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल ने बोला कि भाई आप अगर किसी से कहते हो कि आपको ये काम करना है तो उसको आपको साथ साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि अगर वो अपनी टीम से रिलेटेड ये डिसीजन लेना चाहे, किसको कहाँ क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, तो वो आपको साथ साथ देनी पड़ेगी। बिना अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी नहीं दोगे। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस। मीन्स जो आपको, जो कहने का मतलब है, आपको ऑर्डर्स अगर मल्टीपल बॉसेस से आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे ओवरलैप भी करेंगे, डुप्लीकेसी भी होगी, और फिर इंसान कंफ्यूज होगा मुझे किसकी बात माननी किसकी नहीं माननी। तो वो डुअल वाला काम नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम वन बॉस। और आपकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यही बोलती है The कि finest आप, example is like the BCCI right now, the Indian team, split हाँ, captaincy, आपको जो right? डायरेक्शन आएगी, आपको जो कमांड आएगी, दैट शुड बी फ्रॉम वन वे, वन बॉस। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, वर्क। भाई अगर दो लोग सेम स्किल सेट के हैं तो उनको सेम टाइप का काम और सेम टाइप का रेम्युनरेशन होना चाहिए, सो दैट लोगों में भी आपस में कोऑर्डिनेट रिलेशन अच्छा रहे, और एवरीबडी शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ ग्रोथ, प्रमोशंस, परफॉर्मेंस, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने बोला, हेनरी फ्योल की मैनेजमेंट की, कि हर चीज के लिए ना, चाहे वो मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, उसके लिए एक जगह बनी हुई है, उसको वहां तक पहुंचाना है। Even if you talk about people, then there are positions, there are the roles, regulations, responsibilities which are assigned to a particular role, और वहां पे उस इंसान को उस रोल में फिट करना है। So that means आपके पास एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, मटेरियल का भी और लोगों का भी। डिसिप्लिन, ऑब्वियसली सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू फेल डिसिप्लिन में आती है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उन सब के पास बिल्कुल क्लियर डिसिप्लिन, ऑर्डर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में वो क्या बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोगों को जरूर एनकरेजमेंट मिलना चाहिए ताकि वो इनिशिएट कर सके नई नई चीजें, नए नए मे बी रिसर्च, और मे बी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन, आइडियाज, पार्टिसिपेटरी मैनर्स, पार्टिसिपेटरी सेशंस, सो दैट वहां पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, और रादर हम सब एक प्रोग्रेसिव अप्रोच में चले। फेयर रेम्युनरेशन सेम है कि भाई एज पर योर रोल एंड एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रेम्युनरेशन भी फेयर होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स, एज वन ऑफ यू हैज करेक्टली सेड, कि बार बार प्रोजेक्ट चेंज ना करके पहले उसको एक पीरियड तक एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के साथ या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करके रखना चाहिए, ताकि उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो, और फिर वो आगे उस कॉम्पिटेंसी को दूसरों में भी इम्पार्ट कर पाए। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब है कि आपका जो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, जैसे अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे, उन्होंने बोला कि अगर डी को कोई मैटर ए तक पहुंचाना है तो डी पहले सी से बात करेगा, सी बी से, और बी फिर आगे ए को देगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट डाला गैंग प्लान का। उन्होंने बोला कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, या कोई आपस में कोई इनको दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को डायरेक्टली बात करनी है, तो डी कैन इफेक्टिवली रीच आउट टू ई, एंड जी कैन इफेक्टिवली रीच आउट टू बी। सेम वे सी कैन इफेक्टिवली रीच आउट टू ए ऑल्सो, और ई ऑल्सो, डिपेंड्स कि उस टाइम पर आपकी नीड क्या है, राइट। सो एक सिंपल परमिशन के साथ आपको वो कम्युनिकेशन का जो पूरा वो जो हायरार्की है, वो आप उसको छोड़ के आप सीधा रीच आउट कर सकते हो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स कि हम सबको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करके जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस पे फोकस करना है। देन एस्पिरेट डी कॉप्स मीन्स जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, वो आपस में हार्मनी रखें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे एम्प्लॉयज के अंदर, और लोग उसको कंटिन्यूएशन पॉजिटिविटी के साथ, हाई मॉरल के साथ कंटिन्यू करें, और उसमें आप लोगों को उस तरह से मोटिवेट करें सो दैट वो आगे अच्छा परफॉर्म करे। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि आपको देखना है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ वर्क, यू हैव टू मेक इट only or keep it only to the top management, or you need to delegate or give it to different layers of management also, or maybe different department.
जैसे अगर आपको मॉनिटरी रिलेटेड डिसीजन लेना है, आप उसको सेंट्रलाइज कर लो। आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, टीम की कितनी ट्रेनिंग होनी है, क्या होनी चाहिए, वो आपने उस काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में भी बांट दिया। देन वी हैव नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हम लोग फिर ये इसका पर्टिकुलर फंक्शंस के वो ये करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे वो। आई थिंक हम लोगों ने आज काफी अच्छा कवर कर लिया। हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जितना है मैनेजमेंट की डेफिनेशंस और फंक्शंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस हमारे हेनरी फ्योल का पूरे पूरे प्रिंसिपल्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? Ma'am, I have a question. हाँ, Regarding these principles, like we need to explain in the exams in each and everything, or like we can just chalk out the points. no, see, and say, depending on your marks, number of marks. If you have a full-fledged question for this particular topic, try to explain and give it some examples also. ठीक है, that will help you to fetch good marks. अगर बहुत जैसे 5-7 नंबर का आ गया तो 3-4 लाइन में खत्म कर देना। ठीक है, ठीक है. any other question guys? When is the tentative date of examination? That you have to check with Tawfiq or maybe Seema. Any other Thank you, question? ma'am. That's it, ma'am. That's it. That's ठीक it. है guys, thank you so much for your Thank participation. you. Thank you, ma'am. All Thank you, right, ma'am. bye.